Chill Tonight with Mariam. मैं एक आरजे हूँ इधर ऑन सिटी 1016. आपने कभी नहीं सोचा कि फुल टाइम मैं यही काम करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन? So it's a very very toxic place if you make it toxic. कुछ भी हो सकती है मेरे ख्याल में. कंटेंट क्रिएशन भी इसी तरह ही है. इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस. इट इज अ बिजनेस इन माय व्यू. डज इट गिव इनफ इनकम या सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए? जिनको 5 महीने लगे, जिनको 5 दिन लगे, they get so demotivated कि यार छोड़ो, let's do something else. एग्जैक्टली. अब वीडियो बनाना एक बात है, उसका ऑब्जेक्टिव एक क्लियर करना बट दूसरी बात है, और उसके बाद उसको मोनेटाइज करना तीसरी बात है. So I don't have the guts right now. I want to be an actor. थोड़ा ऑडिशन देंगे यहाँ पे? Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. वेलकम बैक टू थिंक एंड ग्रो 10x. आज अगर मैं ये इंट्रोडक्शन खुद कराऊंगा तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती होगी. आज जो हमारी गेस्ट है, मेरे ख्याल में वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें तो ये जस्टिस होगी. लेट्स डू इट. ओवर टू यू मरियम. थैंक यू सो मच तारिक जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर. वी प्लेड अ गेम, स्नूकर गेम. I won. You did. So for all of you, my name is Mariam और मैं एक आरजे हूँ इधर on City 1016, the UAE's #1 Bollywood music station. मैं एक सिंगर हूँ, well self-proclaimed singer, love dancing and over the past few years एक content creator भी बन गई हूँ some sort. So I'm getting love from basically everywhere. So yes, I'm here today that I because can of that. assure you. She's getting love from everywhere. She's a superstar in the UAE, social media queen, and there's a lot of stuff that we'll learn from her today, from her story, journey, and whatever she is doing. Thank you. मैंने जिनसे भी बात की आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं. मैं रेडियो इतना सुनता नहीं था. अभी सुनता हूँ कभी कभार सुबह ऑफिस आते हुए. तो आई वॉज नॉट डीप इन टू लिसनिंग टू सिटी 101 एंड ऑल ऑफ दैट. तो जब टीम ने बात की कि मरियम शुड बी अ गेस्ट, तो फिर मैंने जिससे भी जिक्र किया उन्होंने कहा वाह वाह वाह. Really? जैसे ही ये बातें सुनी मैंने कहा फिर आए. I'm just glad I'm here. थैंक यू मरियम. इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर हैविंग यू हियर. तो आपने बात की आप यू आर अ सिंगर, you're into dancing as well, you are a content creator. तो कहानी मेरे ख्याल में कंटेंट क्रिएशन से शुरू हुई होगी. कब हुई, कैसे हुई, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए हमें, फिर उससे बात आगे बढ़ाते हैं. एक्चुअली एक थोड़ा बहुत मिक्स था. तो मैंने ऑलरेडी रेडियो ज्वाइन कर लिया था एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग स्लोली, लेकिन कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर एंड ऑल ऑफ दैट कुछ था नहीं. बस पोस्ट ही करती थी मैं. एंड देन रेडियो हैपेंड. मैं रात का शो करती थी एंड देन कोविड हिट. अच्छा. तो ऑब्वियसली रात का शो, सब लोग घर में है, कोई रेडियो नहीं सुन रहा था सिवाय मेरे मम्मी पापा के. एंड आई एम लाइक मैं क्या करूँ. आई थॉट पीपल आर गोना लिसन टू मी ऑन द रेडियो. बट आई स्टार्टेड एंड आई थिंक इन अ ईयर और टू कोविड हिट एंड आई एम लाइक अब मैं क्या करूँ. एंड आई टुक ओवर सोशल मीडिया देन बिकॉज एवरीबडी वाज ऑन देयर फोन. Beautiful timing. Yeah, what a beautiful timing. I thought where people are going to listen to me on the radio, people actually saw and heard me on social media. तो मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया. आई वॉज ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम बट आई स्टार्टेड टिकटॉक ड्यूरिंग कोविड. तो माइक के सामने आई स्टार्टेड सिंगिंग, डांसिंग, इन बिटवीन माई शो ओनली. एंड दैट्स हाउ सोशल मीडिया टुक ओवर. बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे ज़हन में. वेरी गुड. उससे पहले एक गाना तो सुना दीजिए. Okay, so my voice is not the best right now. I'm just recovering, but let me try. खामोशियाँ आवाज है, तू सुन ले तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी. घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बातें करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ. Sorry Beautiful. about my voice. Beautiful. It's just all over the place Beautiful. right now. Very, very powerful voice, Mariam.
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो कहानी की तरफ चले जाते हैं हम जी। तो कोविड से कहानी शुरू हुई आपकी सोशल मीडिया की जर्नी। जी। रेडियो में कब से थी आप? रेडियो 8 साल हो गए हैं। यानी 2017 या 2017 2017 तो सिटी के साथ ही थी आप? सिटी। सो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके बाद एक इवेंट्स कंपनी, और मैं साइड बाय साइड मैं डांसिंग करती थी विथ माय डांस ग्रुप अवेगा डांस क्रिएशंस। ठीक है। तो मालविका उस टाइम पे थी सिटी 1016 पर। ठीक है। And she saw me practice at her dance studio right now, which is the Hive. She's like, "What are you doing behind the scenes? Come in front, give audition, become an RJ." I'm like, "Hey." And before that, I won a competition, City 1016 पर। मैं बहुत सुनती थी City 1016। अच्छा। तो मैंने एक contest पे पार्ट लिया, and then they went and took us to Prague with 100 listeners. Wow. So I went with them, और मैंने अंताक्षरी खेला सिटी टूर बस में। I'm sure you would have won the hearts there right then. Yeah, my friend actually also won that contest. So she's like, she can sing, let her sing. Saima, her name is. So I sang, and they kept calling me back for unplugged shows. That's when Malu also saw me dance, and then she heard me sing also. So she's like, what are you doing? Come and give audition. मैंने audition दिया. And after that contest in Prague, I got the 2017. I got the job, Right. yeah. वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जी। राइट। तो फिर आप शो पे थी, कौन सा शो था? Chill Tonight. तो Chill वो Tonight. रात का शो था 9 से 12 बजे। राइट। तो Yeah. क्या उसमें एंगेजमेंट क्या थी आपकी, मतलब? So the thing is, रात का शो था, we need normal energy, very soothing energy. मैं आई एकदम एनर्जी के साथ, हेलो आप सुन रहे हो चिल टुनाइट ऑन सिटी 1016, और उसके बाद तड़प के इस दिल, एंड आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग। बट 5 साल मैंने उस शो किया अलॉन्ग विद सोशल मीडिया, एंड देन फाइनली आई लर्नड अ लॉट। लेकिन 9 से 12 बजे, एंड रिक्वेस्ट शो था। ठीक है। तो बहुत बातचीत की लिसनर्स के साथ, तो बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो ये एनर्जी पसंद की गई, लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि I भाई रात think- सोने का टाइम है? आई थिंक इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों मुझे मैसेजेस आते थे कि थैंक यू सो मच, आई वाज फीलिंग वेरी स्लीपी, बट बिकॉज ऑफ योर एनर्जी वी वर अवेक लिसनिंग टू चिल टुनाइट। एंड माय डैड एंड फ्यू ऑफ अदर लिसनर्स, अरे यार इतनी एनर्जी है, तू मॉर्निंग शो करना, तू ड्राइव शो करना, तो क्या रात का शो करती है? तो दोनों, आई थिंक अ मिक्स ऑफ बोथ। सो या आई वाज वेरी न्यू आल्सो। तो ये कितना अर्सा चलता रहा? 3 साल? 5 साल। 5 साल ये चला। इन बिटवीन वी हैड द कोविड, राइट? Yes. तब ये आइडिया कैसे आया कि भाई अब आपने शुरू में एक्सप्लेन तो किया, लेकिन व्हाट वाज दैट डिफाइनिंग मोमेंट कि अब मुझे सोशल मीडिया पे शुरू कर देना चाहिए? तो एक वो थॉट कैसी थी? बोर्डम, because of boredom. Now, during a request show, we are waiting to get requests from people, messages. बहुत कम messages आते थे कोविड के टाइम में, right? अब मैं गाना चल रहा है, एड्स चल रही है, and I'm like, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ करना है, क्या कर रही हूँ मैं? इंस्टाग्राम देखती रही, टिकटॉक देखती रही, फिर मेरा एक दोस्त सनिन, इज लाइक टिकटॉक इज बूमिंग, एवरीवनस कमिंग ऑन टिकटॉक, व्हाट आर यू डूइंग, गो लाइव ऑन टिकटॉक, उधर बहुत लोग आते हैं। तो मैंने लाइव जाना शुरू किया। अच्छा। And then I started posting on TikTok, and a lot of people said, make more videos, we like seeing Singing? you dance, we like seeing you sing. Right. The first viral video TikTok पे was a dancing video. And how long did it take? I mean, you started immediately, कुछ वायरल हो गया था ये? I think because people were more online, it was almost immediately, but I think 5-6 months लगे of अच्छा। continuously posting. ठीक है। और उसके बाद एक hit हुआ, and then there was no Right, turning right. back. Yeah. तो मेरी जर्नी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी Please, सी। please. मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता हूँ, अभी थोड़ा सा मैंने सीखा यहाँ पे। Very well, by the way. You're speaking very well, Tariq. थैंक यू सो मच। जब मैंने स्टार्ट किया मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कैमरा फेस करना, कुछ एक्ट करना, या कुछ भी कहना कैमरा के सामने, इट्स नॉट इजी। आजकल की जनरेशन जो है, जेनजी या उससे भी आगे अल्फा, दे आर यूज्ड टू द कैमरास, Yeah. राइट? They're नॉट born माय with it. जनरेशन। Yeah, of course. बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मेरे लिए। एक रील एक हफ्ते में बनाते थे हम, उसको पोस्ट करते थे, फिर अगले हफ्ते नई रील की तैयारी थी, तो इट वाज वेरी वेरी टफ। Yeah. मुझे याद है कि वो एक जो एफर्ट थी ना, बहुत ज़्यादा थी। आई एम श्योर यू आर वेरी नेचुरल, यू आर नेचुरली गिफ्टेड, माशाल्लाह, गिफ्टेड इन मैनी मैनी टैलेंट्स। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी रहा होगा। I've always loved being in front of the camera. जी। Always. जी। But and I understand where you're coming from, because mummy papa bhi, they take like, obviously you are way younger than them, but थैंक यू I was just going to say no, oops, I'm sorry, but like I understand, because mummy papa and obviously the generation under them and then me,
there is a way. We've seen people on the big screen. We've seen like a Shah Rukh Khan on the big screen. We think that everybody, even when I started, I thought everything that needs to go up on social media where thousands of people are watching us need to be perfect. Abhi kya hai? If you see even right now Instagram or TikTok pe, the most natural videos are doing much better. They are the People best. want more natural They are videos. the best videos, of course. Properly short videos इतने मतलब TV commercial type के नहीं चलते हैं इतने ज़्यादा. So that is the difference. तो आपका नेचुरल था, लाइव था? Both. Okay. I started with नहीं, I have to look a certain way, I have to be a certain way, और बहुत pressure होता था. Right. I have to make sure I look a certain way on because you know. And then when I started seeing कि natural लोगों को पसंद है, just be yourself. Then I started becoming easy on camera. So that also took me a while, you know, to get there. But I totally understand where you're तो coming कुछ from. पहली वीडियोस की कुछ याद है कि क्या फीलिंग थी? मतलब आप लाइक्स को देखती होंगी, भाई कितने लाइक्स आ गए हैं, आज कम आए हैं, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी हार्ट बीट नीचे. व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? मेरे even साथ तो now- बड़ा हुआ है. even लाइक्स now- अभी भी इतने नहीं होते. Even now. लेकिन मसला ये है कि बहुत ही प्रेशर होता है. बहुत क्रिएटर ही. के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है ये. Now we, as a content creator also, we are getting work for our pages. We have to also make sure कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा interaction सही जा रहा है, all our activities are going well. And right now what's happening, इतने सारे मतलब bots हैं internet पे, people are buying fake followers. How do you compete with that when you want to be organic and real in a world like this, right? But I will still tell you, pressure अभी भी है to be relevant. सही. अभी भी है. I still go back and watch all my likes. I still want to see कितने views मिले हैं. I'll post something, उसके आधे घंटे में I want to see how many views. It has become a constant, you know, something that has become automatic. Switch on your phone, check how many. ये अजीब सा स्ट्रेस नहीं फील होता? मतलब बहुत ही अजीब सा stress है. And it's something that you can't do anything about. You don't want to do anything about. You shouldn't do anything about. But it plays with your mind. यार अच्छा ये नहीं, अब client क्या सोचेगा? ये reel अगर अच्छा नहीं गया है, I'm not going to get more work. तो क्या इंसान ये वैलिडेशन देख रहा होता है? क्या होता क्या है? मतलब मैं खुद समझने की कोशिश करता रहा. कई मरतबा मैंने डिलिबरेटली इग्नोर किया कि भाई ना देखो. Correct. ढूंढ क्या रहे होते हैं क्रिएटर्स इसमें? It's a mix of everything. It is validation. It is also after doing a lot of hard work on that reel. If you don't get a certain view or you don't get likes, if someone comes out and tells you कि मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया है, I don't care about the likes, मैंने अपने लिए, it is absolutely wrong. I don't think anybody takes an extremely good video and then doesn't think about the views. I think they're lying. They are lying. Yes, it's a different thing कि आपको नहीं देखना है likes just for your own mental, you know, well-being. But to go back on Instagram to check your views after doing such a good job is for validation, of course, and for obviously to learn more because you want to keep doing this. कि अगर ये सही नहीं गए तो let me do something different later. You know, but Instagram is it's you're playing around with algorithm, you're playing around with a lot of things. So sometimes things just work. So you can't let it play with your mind. लाइक्स आर लाइक तालियां. यानी शो Of अगर आप course. किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको तालियां ना बजें Of course. एज अ परफॉर्मर, देन यू फील लाइक Of course. मतलब क्या चल रहा है? Exactly. And if you notice also, a lot of creators I've seen, including myself earlier, हजारों अच्छे comments होंगे, दो तीन इतने बुरे comments होंगे, they will reply to that बुरा comment. They will not care about, I mean, not that they don't care. They will not comment back to a few of the good Right. comments. Why? Because that hurt. The hate comment hurt. So it's a very, very toxic place if you make it toxic. Wow, in your mind. wow. तो पहली रील आपकी होगी वायरल. पहली एक्सक्यूज मी, पहली रील जो आपकी वायरल हो गई, तो तब क्या फीलिंग थी? लाइक्स तो बहुत सारे आ गए. कितने लाइक्स थे बाय द वे? Oh, I don't remember. I really don't remember. But I remember, I think views had touched about 1 million, 2 million views. ओके. And more than the views, I realized जब लोगों ने उसके साथ remix and duets किए थे. That on TikTok it's duet. तो duets किए, everyone started, there was a news channel in Qatar. Right. In Qatar. Right. That made like this girl is going viral as an RJ, but she's also a great dancer. उनके reels viral जा रहे हैं and all of that. I'm like, okay. That's when I felt it. When other Right. people started talking about it. तो फीलिंग क्या थी? I was on top of the world. I felt like finally my voice is going to be heard. Finally, I felt like I'm going to be seen. And I love being on camera. अगर आप मेरे बचपन के videos भी
अगर आप देखोगे Hmm. जब पापा शूट करते थे आई यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई एम लाइक डू ऑल दिस ड्रामा ऑल दिस नाटक Hmm. सो फाइनली व्हेन पीपल आर सीइंग दैट वीडियो इवन दो इट वाज नॉट द बेस्ट वीडियो इतना अच्छा सा मैंने शूट नहीं किया था बस स्टूडियो में मैंने शूट किया बट इन Right. कोविड वेयर Right. पीपल आर सेइंग सब कुछ गलत चल रहा है इफ आई एम पुटिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस दैट जस्ट मेड माय डे ब्यूटीफुल। Makes तो my day. ये फीलिंग तो बहुत अच्छी बात बहुत है, ही लेकिन खूबसूरत। उसके साथ साथ एक प्रेशर भी आ गया होगा कि भाई अब जो बनानी है अब वायरल ना गई तो क्या फीलिंग होगी? वो तो डेफिनेटली है और ये हुआ जब मैं when I went viral on Instagram not TikTok Hmm. and I went viral on Instagram for my mashups this is three, 4 years ago Hmm. पहला मैशअप वायरल गया दूसरा मैशअप और वायरल गया तीसरा मैशअप वायरल गया उसके बाद आइडियाज was stuck I was blocked I was like अब आइडियाज क्या है और लोगों के कमेंट्स जो आते थे नो योर फर्स्ट वन वाज गुड सेकंड वन इज नॉट दैट गुड प्रेशर तो बहुत है स्पेशली आफ्टर गेटिंग वायरल यू जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी अप देयर लेकिन नहीं होता है Hmm. बिकॉज लोगों के दिमाग में भी ऐसा होता है कि नहीं जो मैंने पहले सुना था ना दैट शॉक फैक्टर इज ओनली गोना हैपन इन द फर्स्ट वन Hmm. शॉक फैक्टर इज नॉट गोना हैपन इन द सेकंड और थर्ड वन तो वो शॉकिंग जो शॉक फैक्टर है दैट्स नेवर गोना हैपन नो मैटर हाउ गुड योर मैशअप और हाउ गुड योर वीडियो इज सो इट्स नेवर गोना गेट देन यू शुड जस्ट बी ओके एंड हैप्पी विद व्हाट यू आर पुटिंग आउट देयर Right. Now you've gone viral. Yeah. 2020, around that time, right? You were playing RJ, of course. तो उसके साथ साथ फिर आपकी जो RJ की लाइफ थी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? Oh, beautiful. You know, because I was relatively new, बहुत ही new थी, meetings में भी all sitting, I felt like I couldn't give my input before. That is maybe in my head, I thought I couldn't give my input. सारे जो लोग हैं senior presenters थे, I used to listen to them so much. You know, I was very intimidated कि यार ये बहुत सारे बहुत amazing presenters हैं, I can't talk, they're giving some amazing ideas. And I felt like I can't put in my input. But then after going viral, I felt not just viral, but after I put up a lot more videos, there were a few of them who came up to me and asked me, यार social media पे क्या करना है? Can you tell me, can you help me out? तब जाके लगा मुझे, okay, if these are my colleagues now who are asking my advice, I felt so good. Because I've learned from them. Radio, if you see, I've learned from all my colleagues. And so if social media, they're coming to me, I felt like I had my voice then. Wow. On air and off air. And there was validation. Validation, exactly. An extra, sense of confidence. Yes, by the people that you've been listening to for the longest time. right? तो अब अगर आप कंपेयर करें, it's been 5 years, right? Yeah. तो 5 सालों की जर्नी कैसी रही उसके बाद? I mean, Chill Tonight किया मैंने 9 से 12 बजे in the night. And then I got to do a show with Lokesh, which was the drive time, which was the prime time show. And I would give credit to all my wonderful colleagues because along with social media, with their training, I think when I get the prime time, it's a big deal for an RJ, especially for a new RJ to get a drive time show. It's a huge deal. 3 साल मैंने वो किया लोकेश के साथ. And I think I've learned the most when it comes to radio from Lokesh because before that I was alone on the show. इतनी training मैंने नहीं की, passing by, talking to people, yes. But Lokesh taught me the best of the best when it comes to radio. And today, in front of you, Tariq ji, it's been 3 months, I'm doing the breakfast show. Absolutely. Which is also, I think, one of the most important shows. मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा exciting यही रहा होगा आपके लिए. Exactly. And it's already been 3 months. I'm doing breakfast with Varun. Absolutely. So this has been my journey and this is a mix he's of... superb. Absolutely. Yeah, absolutely. So this has been my journey in the last 5 to 8 years, you know. And this has come with social media. Of course. It's come with that along with my radio. तो ये journey. recognition फिर बढ़ती गई उसके साथ साथ रेडियो पे आपको ज़्यादा of course इज्जत मिलनी शुरू हो गई. Yes, yes. और I'm sure they would have planned the shows keeping you in mind, right? Yeah, around you. तो मेरा जो प्रमोशन था ऑन एयर, it used to be, अरे मुझे सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है, वो काजोल दैट अंजलि इन कुछ कुछ होता है, वो जो डायलॉग था दैट हैज बिकम माय डायलॉग ऑन सिटी 106. Can you say that here? मुझे सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है, सो दैट्स व्हाट अंजलि's कैरेक्टर डज इन कुछ कुछ होता है. सो या दैट हैड बिकम माय थिंग. सो आई एम नोन फॉर दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. दे कुड ओनली सी मी डांस ऑन सोशल मीडिया, राइट? सो
Yeah, it's been my journey. ब्यूटीफुल। तो आपके साथ साथ और भी, क्योंकि कोविड ने बहुत सारे क्रिएटर्स को जन्म दिया, यू नो इट वाज द टाइम व्हेन Yeah. पीपल स्टार्टेड एक्टिंग एंड यू नो डूइंग स्टफ ऑनलाइन, लॉट ऑफ पीपल यू नो मस्ट हैव गॉन वायरल एज वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप अपने साथ कई लोगों ने जिन्होंने शुरू किया होगा, उनकी जर्नी को आप कैसे देखती हैं? मतलब कोई हैं ऐसे लोग जिनको आप कंपेयर करती रही होंगी या उनसे इंस्पायर होती रही होंगी? So very recently, actually, so I've been inspired by a lot of beautiful influencers, a lot from India as well. Prajakta Kohli, Mm-hmm. because I want to be an actor very soon. I really want to be in front of the camera. So Prajakta Kohli is one. A content creator thi. She also did radio. She was, I think, an intern in radio, and then that didn't work out for her. And then she became a big content creator, and now she's doing movies and she's acting and all of that. So she's a huge inspiration for me. But in terms of singing, Shirley Sethia and Lisa Mishra. Shirley Sethia and Lisa Mishra both started on YouTube. And now they're playback singers. Lisa Mishra has also in the Royals that have come on with Bhumi Pednekar and Ishan Khattar. She's acting in that now. Wow. So they have been my inspiration, YouTubers. And recently, I think in the UAE, Twinkle Stanley. I think, you know, a lot of people spoke about her dark skin. I'm a dark skinned girl. And she's taken that and she's made it her thing. She's a beautiful girl. She talks about, very openly talks about her dating life, talks about what she's going through. And a lot of people resonate with her. A lot of girls resonate with her. So I think she's doing fantastic. So these are my inspirations overall. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ गए मेरे दिमाग में। Very समझ good. नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमें सिंगिंग की बात बार बार हमने की है। तो सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर बनने का कभी शौक नहीं हुआ कि मतलब आप प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर लें एज अ करियर? तो सिंगिंग एक्चुअली वेरी फनी स्टोरी। मुझे एक डांसर बनना था, डांसर और एक्टर बनना था। बट सिंगिंग टुक ओवर बिकॉज मेरी बहन और पापा दे यूज्ड टू सिंग टुगेदर। मुझे जलन होती थी कि यार पापा इज गोइंग टू सिट विद हर मोर, ही इज नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम विद मी। तो उसी दौरान आई स्टार्टेड सिंगिंग विद पापा एंड दैट्स हाउ सिंगिंग केम टू मी। तो राइट। पापा यूज्ड टू टीच मी। तो इट वाज नेवर अ थिंग कि मुझे प्रोफेशनल सिंगर बनना है। और रेडियो केम इन द पिक्चर एंड सिंगिंग टुक ओवर मोर देन डांसिंग। राइट। तो अभी जाके मुझे आई फील लाइक आई शुड लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई शुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग, बट I never got the time after, you know, joining City 1016, Right. you know, because of the work. And not that I didn't get time. If I had to make time, I could. But just, it was never the first thing that came to my mind कि मुझे लेना है lesson. It was never the first Right. thing. Yeah. तो प्रोफेशनली आपने सीरियसली इसको सोचा ही नहीं, एज अ टैलेंट यू बीन Yeah, it is मेकिंग one-off. यूज ऑफ इट। Correct. राइट। तो डांसिंग के बारे में प्रोफेशनली जाने का कभी नहीं सोचा? No, because I was part of a dance crew already. राइट। So we were doing stage shows and, you know, all of that was happening anyway. So I never thought of dancing or taking that professionally. राइट। तो फिर अब एक्टिंग की बारी आ गई। सुना है कि आपने एक मूवी में भी एक्ट किया है, क्या बना उसका? Who told you this? Who told you this? किसने बताया भाई? Yes, I have worked in a movie. It is Bloody Daddy. And वो शाहिद कपूर की मूवी थी। तो मैंने सीन भी किया शाहिद कपूर के साथ. It was a bathroom scene where my dialogue was shady boys, because his whole thing was he had to come inside the washroom. राइट। And it was the ladies' washroom. So I was like, hey, shady boys. That was my dialogue. राइट। I was like, I just hope this is there in the movie. फिर काट दिया, edit. काट दिया, दो लगाए नहीं? Can't. So I always tell people कि अगर आप Bloody Daddy देखोगे, just wait for the credits. उस credit में मेरा नाम है. Just wait for the credits. I'm there. But it was amazing because I went for the auditions. Of course, I mean that's what And is this coming entire- to. Yeah, it was the beginning, and you shouldn't worry about it. मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा talent है आपके अंदर. It will happen, and you've rightly said that that is the next thing, right? Yeah, That you- hopefully. I'm really trying. Let's see. तो Let's see. किस तरह की मूवी ट्राई करेंगी हम, या जो भी आ जाए कर लेंगे? See, honestly, right now, it could be that if I get a good opportunity, I could, or जो भी आए, OTT हो या a big, you know, banner film, whatever comes my way, I will try. Because I don't want to be कि मुझे ये ही करना है, वो ही करना है. Because when it comes to Bollywood or when it comes to that kind of scene, there are a lot of other talented people out there. And I'm here in the UAE.
sometimes, you know, you have to go to Mumbai, you have to try your luck there. I'm not going to be able to do that. It's because I'm here, and if things come my way, Bollywood is coming to Dubai. Oh, you're meeting with a lot of people here, right? Correct. But it's, you know, sometimes, like if I'm meeting a Shah Rukh Khan or if I'm meeting a Anushka Sharma, or I don't think they have a say. I mean, of course, Shah Rukh Khan, but I don't think they have a say. If you're meeting like a casting director, maybe yes. So I have to try my luck and see how I can do. So I'm working on myself. Gym ja rahi hu main. You should be happy about it. Bilkul. Yes. Gym ja rahi hu, trying to work on myself first before I'm ready for the camera. So that's what I'm doing. Right. I think it'll happen very soon. Inshallah. Happen Thank very you. soon. Inshallah. Thank you, Inshallah. तो इन्फ्लुएंसर की लाइफ पे आ जाते हैं थोड़ा सा. मेरे ख्याल में इतनी इजी लाइफ नहीं होती है. जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. यू आर राइट. तो लेकिन ये जर्नी बड़ी टफ होती है. हमने थोड़ी सी आपकी जर्नी पे बात किया. हर एक के लिए इतना आगे तक बढ़ना, यानी इतना कंटेंट क्रिएट कर लेना और सक्सेसफुली वायरल भी हो जाना और अटेंशन भी मिल जानी, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं रहता, राइट. जिनके लिए हो जाता है, लाइफ इजी होती है. मतलब डज इट गिव इनफ इनकम या सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए? It does. राइट. It definitely gives you a lot of income if you're doing it the right way. And it does give you security in a way where अगर आपने अच्छे से प्लान किया है, you can leave what you're doing and you can do this full time. The problem with that is you need the guts to leave a job that is giving you a fixed salary to just do this. और मैंने ट्विंकल स्टैनली के बारे में बात की थी थोड़ी देर. She's done this. And she's doing so well. But you've got to have a proper plan. You've got to make sure that you will get this kind of amount. You know, you have to plan it accordingly. And your question that yes, it does give you a boost. If it does give you a boost, it does give you confidence. But everybody has a different journey. Like right now, मेरी जो journey है, I do have a fixed salary as well because मैं RJ का भी job करती हूँ. जी. What is difficult is the planning every day. You're working 12, 16 hours. Really? Because you're also doing your 8-hour shift at your job. Or City 1016, when you're doing a radio show, you have events along with that. उनके भी खुद के clients होते हैं. And you have to give that priority because that is your job. And then you have content creators. As a content creator, you have your job where you're getting your own clients as well, your own events. So you are literally working your double life. Which is hard. Which is hard. Obviously, pros and cons. Pros, you're getting money from both sides. Hard thing is social life is very low. You have to really squeeze in time for your people. So that is the hardships. But no complaints there. This is the life that I've selected. And I'm telling you, content creators, if they make it, is one of the best lives. लेकिन कितने % make it? So that's what, with hard luck, with hardship, I think luck also plays a huge role. And I've been extremely lucky that way. Let it me getting the radio job also with the contest and all of that. And my mashups going viral. Huge luck has played a huge role with me. So I am great. But I've seen content creators who have done wonderful with their content. But something is just not helping them. And what is that? I don't know. And it's unfortunate कि कितना भी try करें नहीं हो रहा है. And I'm like, क्या करूँ? You can share a post, you can help them, but it just doesn't work. So I don't know what it is. And I'm telling you, either it's luck. Because I've seen better mashups. I have seen better mashups than me, and it's not gone viral. I'm like, my goodness me. So it's luck, and it's just continuous posting. And sometimes people, you know, they stop posting. नहीं जा रहा है अच्छा, let's stop posting. मेरे ख्याल में तो एक बिजनेस की तरह ही है. मुझे समझ आ रही है कि मतलब जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने किया, तो it was a long journey, of course. For a good period of 6 years, we were a team of only 4 people. Can you imagine? And अब माशाल्लाह we have around 150 people. माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह. तो जर्नी मेरे ख्याल में कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो या बिजनेस की हो, वो तकरीबन एक ही रहती है. लक बिजनेस में भी बहुत सारे 95% ऑफ बिजनेस एक्चुअली फेल विद इन द फर्स्ट 5 years. वो बहुत सारी रीजंस होती हैं कि वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, लकी नहीं थे. कुछ भी हो सकती है. मेरे ख्याल में कंटेंट क्रिएशन भी इसी तरह ही है. इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस. इट इज अ बिजनेस इन माय व्यू. इन्फ्लुएंसर अगर इनकम बना रहा है
तो वो बिजनेस ही है फिर। Of course, it is. तो उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करता रहे तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। That's what. I know content creators जिनको 5 साल लगे, जिनको 5 महीने लगे, जिनको 5 दिन लगे. The first post you put viral. We have all different types of stories in the content creator business, but they have continued. कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। Consistency is the problem. बिल्कुल बिल्कुल। And also with social media क्या हो जाता है, because you're so hungry for validation and likes, जब नहीं मिलती है, they get so demotivated कि यार छोड़ो, let's do something else. एग्जैक्टली। तो हमारे साथ भी यही है, जैसे ही हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की, मैंने इससे पहले आपसे बात हुई, दिस इज फॉर द एजुकेशन, राइट? आई मीन वी जस्ट गिविंग बैक, वी हैविंग गेस्ट, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी कहानी सुनाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ ऑडियंस के लिए मिल जाता है उनको। और कई लोगों ने बहुत सारे एक्शंस ले लिए हमारी पॉडकास्ट की बेसिस पे, तो लेकिन इसको कंटिन्यू करना एक बड़ा चैलेंज था। अगर हमारा हार्ट एंड सोल इसके अंदर नहीं होता तो मेरे ख्याल में अगर हमने अभी 40+ एपिसोड्स किए, it wouldn't have happened. Congratulations first of all. Thank you. But you're right. हाँ जी, तो मैं अभी टीम से बात कर रहा होता कि हम तो 400 एपिसोड्स की बात कर रहे हैं आगे। Wow. फेलियर तो होना ही है, कोई अच्छी होगी, कोई नहीं अच्छी होगी, कहीं कुछ लर्निंग होगी, कहीं कुछ होगी, लेकिन जर्नी जो है बंदे क्लियर होनी। अगर आपका मेरे ख्याल में हार्ट एंड सोल अंदर है तो कंटेंट क्रिएशन कहीं ना कहीं चल जाएगी। Yes. कहीं ना कहीं आपको वैलिडेशन मिल जाएगी। Exactly, and sometimes आपको व्यूज नहीं चाहिए. Maybe that one person, let's say for example, my videos didn't work. मैंने कुछ एक्टिंग किया, कुछ सिंगिंग किया, एक डायरेक्टर और एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक अच्छा लगा. Someone must have seen it. व्यूज 10, उस 10 में से एक बिल्कुल कास्टिंग डायरेक्टर था. वाह। So you just never know कि क्या हो सकता है उसमें. You don't need the views. It could be something else altogether. आपको एक बिजनेस, आपको एक क्लाइंट मिल सकता है. Even if your views are, let's say 10. Exactly. Out of 10, maybe 2 people will come and go like, I want to work with InZone. Exactly. You know. तो ये जर्नी जो है कंटिन्यूएशन की बड़ी, क्योंकि इसमें तो बड़ा हार्ट ब्रेक होता है, बंदा बड़ा इमोशंस के साथ लगा हुआ होता है, और 10 वीडियोस के बाद अभी यार कुछ नहीं मिला. Of course. And not just for creators who are not working. Even for me, as greedy as this sounds, अगर मेरी वीडियोस चल रही है and I'm seeing okay very good views, फिर एक ऐसा वीडियो होगा जो नहीं चली, ऐसे ही मैं 2 दिन. Seriously. Because I'm greedy, no? लालच. क्यों ऐसा हुआ है? Then I start thinking. Then I start go like okay, अब मैं क्या करने वाली हूँ? अब मैं really plays with your mind. So I'm trying to work on this, but ऐसा होता है. लालच is something, so I'm being greedy, but there are people who are still struggling for. Exactly. एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने पर्सनली फील किया है, मे बी यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस बेटर, वो ये है कि आपके अंदर तो टैलेंट है माशाल्लाह. you have the singing, then dancing, then mashup, and you have a beautiful voice mashallah, which is very very strong. रेडियो पे आना कोई आसान बात नहीं भाई. जिनके पास सोशल मीडिया पे आने का शौक है लेकिन आइडिया की क्लैरिटी नहीं, करना क्या है, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा कम है, वो करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करके आगे लाना है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है. मैंने बड़ी स्ट्रगल की बाय द वे कि किस मुद्दे पे बात करनी है, राइट? नेचुरल टैलेंट तो है नहीं सिंगिंग का, ना ही डांस का है. आपने ट्राई किया है तारिक जी? ट्राई तो किया होगा. डांस मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं. ट्राई कर सकता हूँ लेकिन मेरी बीवी को पता है कि एक ही स्टेप है मेरा. कौन सा वाला है? बस ये भी नहीं आता है. We will try after this. तो इसके बाद ट्राई करेंगे. तो अपने आप को मेरे ख्याल में डिस्कवर करना जो मैंने फील किया है, मैंने तो कर लिया काफ़ी हद तक. अब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है आगे, लेकिन इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम. 1.5-2 साल लग गए हमें जनरल वीडियोस बनाते हुए. अब हम बड़े स्पेसिफिक एक नीश की तरफ, अपने इंटरेस्ट की तरफ आ रहे हैं. मुझे यूएई की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं. दुबई की हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट? एंटरप्रेन्योरियल लाइफ के ऊपर बड़ा है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियोस बनानी शुरू की. लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रही. तो आपकी मतलब क्या इस पे थॉट प्रोसेस है? सो वेरी सिंपल. राइट नाउ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है where people want to connect with you. Either it could be singing or you're dancing. अभी बहुत सारे सिंगर्स आ गए हैं.
सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेन सिंगर्स, ब्यूटीफुल सिंगर्स. मैं ट्रेन नहीं हूँ. आई कुड बी एक्सट्रीमली एवरेज सिंगर, एक्सट्रीमली एवरेज डांसर. वॉट विल वर्क फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर इज रिलेटेबिलिटी. जैसे आपने बोला कि इट टुक मी सो लॉन्ग टू एक्सप्लोर एंड टू सी वॉट आई वॉन्ट टू डू. आई डोंट, इट्स ओके टू कम ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन से कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ. There will be 10,000 people who are thinking like you right now and go like, oh my God, me too. Oh my God, me too. आप introduction दो, आप बोलो कि मुझे नहीं पता. I'm sorry. That's your one reel. You will see 10,000 comments from there saying, I'm going through the same thing. I'm going through the same thing. Relatability is point number one on social media, according to me. Yeah. It could be your most vulnerable self. That's what I was going to say. Yeah. Sharing vulnerability is very, very Exactly. important. Yeah. Everybody is showing how amazing our life is. Yeah. Nobody cares. Everybody is showing कि मैं इधर, and you can obviously show your good parts as well. But it's okay to show the struggles because everybody will connect with those struggles. My voice, for example, just very simple voice. I'm on the radio. Every morning, I am talking about how my voice has not come back in 2-3 weeks. मैंने आज ही स्टोरी डाली थी. जितने नुस्खे मुझे आज मिले कि ये करो वो करो मेरी मम्मी के ये, I've literally got all of those and people have messaged me saying, can you also let me know? I've also got the same problem because everyone's falling sick right now. The most vulnerable things. Bas, just do that. Talk. Be yourself. You don't have to think too much. That way you won't even burn out. ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी जो वीकर साइड को सामने ला के दिखाना है ना, वो असल में लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती उसको दिखाने की. Correct. यू वांट टू पोर्ट्रे द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ राइट ऑन सोशल मीडिया कि मेरे सब कुछ ही परफेक्ट होना चाहिए. जबकि जो दुनिया देखने वाली है वो ये देखना नहीं चाहती. वो देखना चाहती है कि हमारे जैसा कौन है. Correct. Absolutely. Relatability and vulnerability. Two things that will actually work on social media. Even if you don't know anything. अगर आप खाना भी बना रहे हो आप, and you don't know how to cook. I don't know how to cook. So I'm still learning. मैंने इतना गंदा खाना बनाया. I'll post that, you will see people go like, oh my God, even I would have made that mistake. Example. Right. Very तो simple. बहुत सारे लोग अब ट्राई कर रहे हैं. इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी तो अब एक बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे एक 1 बिलियन फॉलोअर्स का जो है वो समिट होने वाला है. उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी. लेकिन बहुत सारे लोग जो ट्राई कर रहे हैं फेल भी हो रहे हैं. सारी बात, एक फ्रस्ट्रेशन भी फैल रही है. तो ये हमने बातें कर ली, वल्नरेबिलिटी, अपनी जो रिलेटेबिलिटी क्रिएट करें. कोई और टिप्स जिसको बिजनेस साइड पे लोगों को हेल्प मिल जाए थोड़ी सी, कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम बनना चाहता हूँ, कहाँ पे मुझे किस स्टेज पे जाके फील करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब मुझे पैसे कहाँ से बन सकते हैं, किस तरफ मेरी डायरेक्शन जानी चाहिए. ऑब्वियसली यू कवर्ड दैट जर्नी. अब वीडियो बनाना एक बात है, उसका ऑब्जेक्टिव एक क्लियर करना बट दूसरी बात है, और उसके बाद उसको मोनेटाइज करना तीसरी बात है. करेक्ट. So I've seen a lot of brands do this and I think वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है. What will actually sell is emotional stuff. जी. And I will give you the page that I have followed and seen how she's grown. उनका नाम है मनप्रीत. Okay? वो पंजाब से आई है. And she's in the real estate sector. Okay? I don't know if you've seen her videos. When she came in, we knew that she's trying to sell real estate. वो पता चल जाता है उनके पेज से. बट वो कैसे सेल करती है? मैं पंजाब से हूँ, मैं एक लड़की हूँ, was trying to make my life here. I want to buy a private jet. And she sold Dubai as an emotion. She did not sell flats. She did not sell villas. And even though I did not want to buy any house or anything, I followed her because I want to know how she gets her private jet as a girl who has come from Punjab, who's making a living, and how she's talking about Dubai. Or abhi, after I think a few years, she is now the owner of Kirpa Properties. Wow. And doing so well. और अभी भी आप जाके अगर आप देखोगे, she's still selling emotions. She's not selling products. Right. So I think business wise, like I said, ये है, ये ऑफर है, वो ऑफर है. Tell them
bring the emotion side of it. Connect with people. Talk through about your emotions, yeah. office. कितने employees आपने जो अभी किया है. You just told me from 4 employees to 150 employees. आपकी journey, आपकी employees की journey क्या है? How did they come here? What are they doing? The kind of business that you're getting because of the emotional support you're getting from them. You know, it's all of that. That is the thing that they want to see. Right. And the people want to see. Yeah. So The trust factor will build on that. Right. So you'll, I think, naturally realize once you get the traction, you'll get the monetization as well. Automatically. Yeah. Now people are sold on emotions and be real. You don't have to act ki अगर कुछ है नहीं story तो you don't have to do it. Right. तो आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि आप of course I mean you're with City, right? आपने कभी नहीं सोचा कि full time मैं यही काम करती हूँ, content creation? मुझे ऐसा लगा, but you know sometimes I feel so I don't have the guts right now to just become a content creator because I want to be an actor. Content creation is become a thing right now, but मुझे क्या बनना है? Actor. So even though I'm doing City 1, I'm you know working for City 1016, it's helping me here. It's a step closer to being an actor, maybe, you know, because of the people I get to meet. And City 1016 has given me the platform. Right. So many beautiful singers UAE mein. But I've got an opportunity to open for a lot of artists on Coca-Cola Arena stage, on the Global Village stage. और इधर artists कहीं हजारों गुना बेहतर है, हजारों गुना बेहतर है. मैं खुद जाके उनके shows देखती हूँ. And they are not getting an opportunity. I'm getting an opportunity because of City 1016. क्यों छोड़ूं मैं? Beautiful, beautiful. क्यों छोड़ूं? Why would I not be grateful for this? So end game is acting. Yeah, right now it is because मैंने सब कुछ अब कर लिया है. थोड़ा audition देंगी यहाँ पे? नहीं. नहीं. मैंने गाया आपके लिए. I'm still working on myself. See, I told you I'm still working. mashup भी सुना दे, mashup अपना. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the. You tell me what to do. राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लब में दुनिया का क्या काम. इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आँख मारो तो प्यार. Mommy don't know daddy's getting high at the body shop, doing something unholy. रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होय होय ओए होय ओए होय ओए होय. मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया. Mommy don't know daddy's getting high at the body shop, doing something unholy. Wow, beautiful. Sorry, my voice. Beautiful voice, Mariam. Thank you. वो ये Super. पहला वाला मैशअप था जो मैंने किया था. तो ये वायरल हो गया. ये वायरल हुआ था. ये वायरल हुआ था. जबरदस्त, जबरदस्त. तो अब क्योंकि आपका तो रास्ता बड़ा क्लियर है, आप तो एक्टर बनना चाहती हैं, ऑफ कोर्स. आई मीन दिस इज मैनिफेस्टिंग इट. मैनिफेस्टिंग इट. इंशाल्लाह मैनिफेस्टेशंस रियलाइज इन लाइफ. मैंने भी ऐसे ही किया था. बिजनेस स्टार्ट किया, मैं मैनिफेस्ट किया करता था. अभी भी वही करता हूँ. इट रियली वर्क्स. कि फ्यूचर जो है ना वो मैनिफेस्ट करके लेना. हाँ, करेक्ट. दुआ करके और मैनिफेस्ट करके. एग्जैक्टली. तो दिस इज गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह. तो इसके साथ साथ जो है ना सोशल मीडिया में, कंटेंट क्रिएशन में, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एवोल्यूशन भी हो रही है, राइट? तो उसमें अब जैसे हमने बात की कि 1 बिलियन फॉलोअर्स का जो समिट हो रहा है, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ दुबई स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को ला रही है, राइट? और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आके यहाँ पे गोल्डन वीज़ाज भी मिल रहे हैं उनको, और काफ़ी एक तरह से कंपटीशन भी क्रिएट होने वाला है. लेकिन उसके साथ एवोल्यूशन जो हो रही है, अल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं और तरह तरह की नई एक वीडियो क्रिएशन की टेक्निक्स आ रही हैं, एआई भी आ रही है. तो इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है? कंटेंट क्रिएशन इज हेडिंग टू विच डायरेक्शन एक्चुअली? आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इज हेडिंग टू द डायरेक्शन ऑफ everything. Now everything is going to be on that smart tablet or phone or everything, correct? So pehle to I'm very glad that you spoke about the 1 billion summit, because these are the places you need to be to learn the new things, correct? AI की बात करें,
like they usually say कि AI will not replace humans, but humans who learn AI will replace humans who've not learned AI. True. You have to go with the trend. You have to go with technology. I think content creation right now, a mix of AI, a mix of relatability, all of that coming together will definitely help. And everything is going to happen on that. If you see, if you want copywriting jobs, if you want, let's say, ideas, like you said, right, कि sometimes you don't get ideas. AI बस help करने वाले हैं आपको. But at the end, the human touch is something only humans can give. AI will not be able to give human touch. आप कितना भी chat GPT कर लो. True. कितना भी chat GPT, the human touch only you will be able to give, and that's where, that's the knack, and that's where you have to find that thin line of content creation as a human being. There are right now AI related, India mein there is an AI influencer. But if you see her page, there's no human touch. So AI is definitely going the direction of learning new technology, which will help you, which you also need to learn. But you have to make sure that human touch is there for you to have that extra X factor. Right. I agree with you, absolutely. लेकिन AI की जो टेक्निक्स हैं वो रिफाइन इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि एक पॉइंट पे ऐसा ना हो कि भाई ह्यूमन बीइंग और AI के दरमियान कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट ना हो, खत्म ही That's हो already जाए. happening. Right. In the way that अगर आप एक वीडियो देखोगे, sometimes you don't know if it's AI. Of course. Sometimes you don't know. बहुत if सारी it's- वीडियो से पता ही नहीं चलता, अब तो बहुत कॉमन होती जा रही है. Exactly. लेकिन मुझे ऐसा, just to like, not off topic, but just to feel कि I think बहुत सारे rules आ जाएंगे. Like how Instagram is, taking down videos and all of that. ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा in terms of technology, because it can be a very dangerous place to be, especially with AI. So it's not something that I'm seeing, but I feel ho jayega. I just feel you need to be extremely smart about what you're putting out there. You as a content creator, we and as anybody, as a business also, if you're putting content out there, it's on you and it's your responsibility to make sure that the kids who are watching you know for a fact that yes, you are a person they can watch and they can learn from, not feel scared from. So I feel like thoda bahut aapko wo, that's where the human touch comes in. But it's very, very hard to distinguish between AI and the human touch. That's a crazy. ये तो आज की तारीख में है हाँ, ना कि मैं तो देखता हूँ कि 5 साल बाद, 5 साल तो बहुत दूर हैं, 1 साल बाद क्या होने वाला है, राइट? Correct. तो खतरा तो नहीं कभी फील होता कि मरीम के साथ की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी और मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगी? 100%. वो तो कब से हो रहा है. With when Photoshop only started, people are like, अब Photoshop कर सकते हो. Oh my god, Photoshop कर सकते हो. It's so scary to be in this world. अभी AI आ गया है. अब तो in a matter of 2 seconds, someone can use my face and just make whatever they want. अभी किसी ने किया आपका फेस वीडियो बनाई हो? मैंने खुद. आपने खुद किया? But it was for a trend. वो सब आ जाता है trend, Gemini trend and AI trend. But you're actually very right, and I've not thought about this, that in the next 1 year or 5 years, how scary can AI be? And as a person, as an individual who's responsible for a lot of people who are seeing her content, it is quite scary. I don't really have an answer for that right now. But yeah, just have to be real. वही मैं सोच रहा हूँ कि आपने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू की 2020 की 2020, नाउ वी आर इन 2025, 2030 तक जाते जाते एक फुल सर्कल जो डेवलपमेंट है सोशल मीडिया की, और टेक्नोलॉजी नॉर्मली कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. Correct. राइट? Correct. विच इज स्केरी. It's extremely scary. बहुत ज़्यादा स्केरी है. और you're headed in the right direction, by the way. एक्टिंग वो करें, नेचुरल टैलेंट की तरफ जाएं आप. No AI. No AI. Natural talent, hopefully. तो ये जो इकोनॉमी अब क्रिएट की जा रही है यहाँ पे, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट कंपटीशन भी बढ़ेगा यहाँ पे, और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं मच गया? बहुत ही ज़्यादा. And Tariq ji, I'll tell you, this competition has been happening from years, right? It's happening from the 90s, from the 80s, let it be in companies, let it be the Bollywood industry. Abhi kya ho raha hai? Everything is so available, right? Everything's available in your palm right now. Ki now, the most normal thing that you do is being compared and is being judged. So that's why 2 things people are scared to come out there. Abhi agar aap dekhoge, I was just talking about it, there is a new trend, Gen Z ka trend, about posting zero. Is a new trend.
social media pe, it's called posting zero. That means they don't want to post anything. That is the new trend. Gen Zs don't want to post now because they're so scared of being compared and judged that they don't want to post only. They hardly interact. They only watch. They hardly interact. और ये अब भी मैंने आज ही ऑन एयर बोला था. Yeah, so in terms of comparison, बहुत शोर शराबा हो गया यहाँ से था. Correct. But that is everywhere. That has happened before. That is happening now. The only thing is, it's in everybody's eyes. Everybody can be compared. It's so easy because everyone's on social media. It's easy to tell you, oh, I've seen this podcast, I've seen that podcast, this, that. You will feel the comparison. Before, what used to happen, because social media and it was not over here, you used to meet people. You used to only meet a few 100 people and used to feel like, हाँ ठीक है, they have compared me to this. इतना शोर शराबा नहीं था. And they were real people that you are meeting face to face. Right now, the comparison and the comments that you get are faceless people. Right. So you have to just understand that even though there is a lot of shor sharaba, these are people who don't know you and you don't know. You have to take the comments and take it all in by your surroundings, your loved ones, and people who you meet. That's the pressure right now. Okay? Faceless people, 10, 20,000 faceless people are telling you, and people are getting affected by it. Wow. Scary future. Scary, yeah. Scary. It's very, very scary. Yeah. तो जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स, अगर बहुत ज़्यादा हैवी फोकस हो रहा है, इट्स इनकरेजिंग पीपल टू क्रिएट कंटेंट. लेकिन मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, इन्फ्लुएंसर्स का अपना फ्यूचर को क्लियर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्लियर नहीं है, राइट? आप कंटेंट क्रिएट करने तो लग जाएं अभी, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग इट फॉर? कल अल्गोरिथम चेंज होता है, तो उसके बाद आप किस तरफ जाएंगे? हाउ वुड इट वर्क आउट इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, राइट? Correct. If the algorithm changes, first of all, I don't think social media is going to die down for a very, very long time. But I think a lot of people need to understand कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हो, and I'm not talking about learning algorithms on social media, I'm talking about AI, or I'm talking about taking an online course about like social media or digital marketing or some sort of course that helps you in any sort of way. It could be even playing a musical instrument, learning that online right now, since we've got everything online. You've got to keep updating your skills and not just stay on one. And I'll tell you this, सब लोग बोलते हैं jack of all trades, jack of all trades, master of none. This is half the quote. There is a full quote of Shakespeare. Jack of all trades, masters of none, still oftentimes better than masters of one. Wow. That is the full quote. देखिए, मुझे आज तक इसका पता नहीं था. Yeah. So people think jack of all trades matlab negative. It's not negative. It is a positive thing. Ki you be all of these things. Right. It's okay. You don't have to be that one thing. Experimentation. Experiment learning, and have upskilling. More. Of course. You have to upskill in different forms. So that means create more content. Yeah. Right? If you're creating content for 3 days a week, create 5 days and even more than that, right? Correct. And even off content wise, let's say you're not online. Create skills personally also. Like I will go and learn a musical instrument, right? I will go do an online course on digital marketing, or I will do an online course on baking. Like just upskill. AI, you have everything on. But what is something that is now going to become a big thing is service and the human touch. Right. Cooking for someone. AI can't do that. Right. Learn cooking in the next 20 years. You never know. Cooking will help you get thousands and thousands of things because everybody else is on AI. Beautiful. Just upskill. आपको लगता है कि at some stage हर एक इंसान को content create करना पड़ेगा? For social media? Social media, yes. For social media right now, to be out there and be relevant, unfortunately, yes. Right. And if it's not social media, it's either TV, it's either product placements in movies, but you have to create content. You cannot just sit in an office and assume that people are just going to come to you. True.
तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के Yeah. लिए जो जनरली बड़े शाई होते हैं, राइट? Correct. एंटरप्रेन्योर को बिजनेस का पता होता है कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको Yeah. सक्सीड करना है, लेकिन ये मेरे ख्याल में हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए कंटेंट क्रिएशन विल बिकम मैंडेटरी। उसके बगैर आपकी रेलेवेंस नहीं रहेगी। Correct. क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करना है कंटेंट क्रिएट, बिजनेस उन्हीं के पास चले जाना है, Correct. राइट? Correct. So even if you, let's say, for example, a content or an entrepreneur does not want to do content for social media, let's say, for example, when will you be able to come back to that business? आपको insurancemarket.ae का पता है? बिल्कुल पता है, आप उनको ऑनलाइन देखते हो या फिर रेडियो पे सुनते हो या फिर उनके बिलबोर्ड्स देखते हो, हर जगह। right? A lot of people remember insurancemarket.ae. They know that music because they hear it on the radio, right? They hear it so much on the radio, on all the radio stations, that they're like, insurance market. You have to make sure that people remember you. If not on social media, where else? You can go on radio. You can go on the billboards, be on every billboard. But again, पैसे लगते हैं. Content creation is the easiest because it's free. So if you want to start off with, you should do it. And the best part about social media and doing content creation there is you have the freedom of doing whatever you want. रेडियो पे ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, you can't use this, you can't use that. Billboards पे ऐसे pictures नहीं ले सकते, ऐसे pictures नहीं लगते. On your page, you can do whatever you want. It's yours, It's yours. right? And it's a free thing, right? So you can try, you can test. But it is very important to make sure that people keep remembering you, even for the most weirdest thing. If you are fun, okay, we think of Tariq Ji and we think of InZone. Okay, I know Tariq Ji does a podcast. I want to go and talk to Tariq Ji. Let's find out what he does. Curiosity, kuch bhi ho. But it is important to just in your own way, just keep feeding it to people ki hum hai. Not direct marketing, not hard hitting, but हाँ हम हैं. We are there for you. Come whenever you want. ऐसे. So social media is that for you. Absolutely agreed on that. अच्छा, आपने फ्री की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने. Absolutely free social media, you can just post. Yeah. It doesn't charge you, right? Right. लेकिन बहुत सारे लोग फॉलोअर्स खरीदते हैं, बहुत सारे लोग फिर लाइक्स बाई भी करते हैं, बहुत सारे लोग एड्स भी देते हैं, स्पॉन्सर्ड जैसे बूस्ट करते हैं. Correct. तो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज happening, or let's say how do you see all of these happening in the future, and let's say उनका असर क्या होगा जो लोग नहीं ये टूल्स यूज कर रहे हैं? जो लोग नहीं यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है. And I'll tell you why. So ads are very different. It shows कि हाँ ad लगा है. Like how you see it on TV, we have ads on social media, so that's different. Sponsored लिखा हुआ है. Sponsored, that's different. ठीक है. But when you boost your followers and you boost your likes and all of that, these days clients know. Clients are not dumb. Clients know who's done that. लोगों के followers इतने millions, likes 600, 300. It's not possible, right? Right. Likes अगर ज़्यादा हुए भी, comments नहीं होते. Comments अगर ज़्यादा हुए भी, you can tell from each person commenting कि ये एक bot है. And now there are websites that each and every client use and should use to check how many followers are bought and how organic someone's content is. Khud client, by the way, they come up to me and they come up to a lot of influencers saying, but why should we pay you this much? Okay, because of this. And then they come to me and they say, okay, these are your stats. I was like, thank you for telling me this. I have used these stats for other clients also. It is very easy. अगर आप, I will tell you, I don't know what the website is. अगर आप अभी जाके करोगे, मरियम किस्सत or whatever, it will tell you, okay, very good. How many, what is her interaction? How many people are there? How many fake people? They will tell you. Exactly, it will tell you. And also, I think this is how it works because I've seen it for a lot of people. अगर आपने खुद buy किया followers, bots, Instagram and Facebook know that you can pay. So they will make sure that organically your videos don't work. Because they know you've paid once. They're like, okay, this person can pay. Why should I push the video? Let them pay more. You're talking about the boosting or Boosting. fake bot likes? So boost, like fake bot likes
fake followers. I'm talking about those. राइट बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मिलियंस फॉलोअर्स। मैंने एक भाई साहब को देखा, हाँ. अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। हाँ. तो I want to know ऑफ एयर कौन है? नाम ही लूंगा मैं यहाँ पे। ऑफ एयर बोल रही हूँ. 3 मिलियन फॉलोअर्स यूएई के अंदर, 3 मिलियन। सीरियसली पॉपुलेशन देखें कितनी है। और भाई साहब जब पैसा नहीं लगाते तो तब 12 घंटे पोस्ट को हो गए सिर्फ 2 लाइक्स हैं। 2 लाइक्स? तो ऑब्वियसली वो सारा फेक है। तो ये ब्लेटेंटली लोग कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाई दे डूइंग इट, बट दिस इज सो ब्लेटेंट। या आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इट हैड बिकम अ थिंग वंस, और क्लाइंट्स चेक नहीं करते थे पहले। अब सारे क्लाइंट्स और एजेंसीज नाउ दे हैव come up, you know, they've come up and they're saying, listen, we've seen this, this is not going to work for us. तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का फिर फ्यूचर तो ऑब्वियसली देयर इज नो फ्यूचर। बिकॉज मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नुकसान, जैसे आपने बताया, कि वो एल्गोरिदम आपको फ्यूचर देगा ही नहीं। वो समझेगा आप हमेशा खरीदते हैं, यू हैव मनी इन योर पॉकेट एंड you are the person with the money. We are not going to show your content to anyone. Correct. You pay money, you get this. Correct. और आप उसमें फंस जाते हैं फिर आप। Exactly. दलदल में। Either they start doing more natural stuff, or like start a new page, start something else, go on another different social media platform, start something to become, because नाम अगर है already, they're going for events because सालों से करते आए हैं, उस time पे followers they must have bought. So if they are already in the game, it's okay, but they have to start moving to a more natural procedure, or like you said, upskill yourself in other things. Right. But you have to upskill in any way, whether it's working for you or not working, you have to upskill anyway. Absolutely. That applies to business as well. हम अगर इन जोन पे कोई अपनी सर्विसेज में बेहतरी नहीं लाते, कोई नई सर्विसेज नहीं लाते जो कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर पाएं, so obviously as a business we're not going to move forward. Correct. We're not going to be able to grow. Correct. Competition will come and then potentially they could take over, right? Exactly. Or word of mouth. Word of mouth. Biggest marketing. Of course. Even now is word of mouth. It is. So if like you're telling me कि ये हो रहा है, I will tell another 10 people, they will tell another 20, 30 people. Of course. This word of mouth, even for influencers, bad mouthing is something. Of course. अरे मैंने इस influencer के साथ काम किया, इतना मतलब attitude दिखा रहा था. And then the influencer will not be called for another 2 more clients. Of course. You know, it's all marketing only in their own way. But like you said, yeah, now it's become very easy for clients and agencies to know which influencer they should go for and which content creator should work for their brand. With the bots and everything. It's all transparent. It's all transparent. Yeah. Technology is coming up, so there are pros and cons for both. और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा pro है for content creators who are doing organic stuff, who are not getting their due. Absolutely. You know, so absolutely, yeah, you're right there. आपने एक बात की बड़ी important social responsibility की. You know, influencer का बड़ा रोल है social engineering करने में, right? तो आपने ये रोल किस तरह अडॉप्ट किया? मतलब जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू की तो आपके जहन में था कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा आप याद रखेंगी, जिनको फॉलो करेंगी, या कुछ भी करती रहेंगी? तो definitely there are a few principles and something I wanted to follow, like no swearing and all of that. लोग बहुत सारे, I mean it's okay if they want to do it on their page, but it's something that I don't do on my page. 2 reasons, mummy papa. But also I feel like a lot of children on the pages, you know, they just keep going through your pages, a lot of children there. And one thing radio taught me, radio पे हम लोग गाली गलोच तो नहीं दे सकते, we have to be extremely you know, responsible on air as well. तो जो भी रेडियो पे करती थी वो मैं सोशल मीडिया पे करती थी, and it's worked for me. From parents to kids to friends, they all know that if you're watching a Mariam ke Sath video, you can watch it in front of kids. And that's what I want. And that's what I want. And I'll be honest, obviously my parents are very proud of what I do. I don't want them to be embarrassed because of me when they go out. So that's also the daughter side, the cultural side that's also come up. And it's not something that I do every talking, मैं गाली गलोच नहीं देती. I don't talk like that. So I'm like, okay, let's bring that out in the open. So when my parents hear कि we love Mariam's reels,
she's a great daughter to you. I'm like, okay, my parents are proud, but I also have a social responsibility for kids and daughters and sons who are watching me. Ki when they are on social media, they should not do something. At least watching me, they should not feel like they should do something that's goes against their, upbringing. कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपको कॉल लेनी पड़ी हो कि भाई ये अपॉर्चुनिटी तो आ गई सामने जहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज को ब्रेक करके आई कैन स्टिल क्रिएट बेटर कंटेंट? Not in terms of values, but there are a few brands that have come forward and said, can you please promote us and this and that? And obviously because of very good money, very, very, very good money. But obviously because of culture and differences, I had to say no for a lot of things, So speaks volumes, of course. Of course. And I think it's money will come and go. You do not want a kid or a parent coming and saying, मैंने वो आपका रील देखा है, because of you my kid also started doing this. You would never want to hear that. कि आपकी वजह से, just for example, it's not that brand, but just for example, a cigarette brand. They didn't come to me, but a cigarette brand would have come to me and said, ये करो. मैंने बस पैसों के लिए कर दिया. Now if a teenage boys come to me, oh my God, I watched that, I loved that. मैंने शुरू किया. Imagine, you will feel so guilty for the rest of your life. Yeah. पैसे आते रहेंगे. It will come and go, trust me. You are working hard, it will come. It's never going to be and I'll be very honest, I'm also doing a lot. Everything I'm doing is also for money, right? But there are a few things you have to keep in mind and there has to be a certain boundary. So, yeah. तो आप एक तरफ तो सिटी के साथ हैं, एक तरफ आप अपनी खुद में भी ब्रांड है, राइट? Yeah, correct. कहीं पे कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि जहाँ पे सिटी के पास जा रहा है क्लाइंट, आपके पास आ रहा है? Correct. तो किस तरह हल कर दिया अगर हुआ है तो? So, thankfully, City 1016 doesn't stop us from doing all of this. अगर सिटी पे जा रहा है तो वो रेडियो पे जाएगा, मेरे पास आएगा, मेरे सोशल मीडिया पे आएगा. अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ कि City 1016 has had a tiff with a client, I am representing City 1016. If I go, and that's my first job, that's priority for me. If the client is having a tiff with City 1016 and we have a chat, I will not be able to work with that client for the right reasons. It's not ethical. अगर वो सिटी पे नहीं जा रहा है, अगर वो मेरे पेज पे आ रहा है, I'm still a brand ambassador of City, right? So it is my call, and of course it will also be a City 1016 ka call, saying that let's not work with that client. Clients can do that very easily. I'm not liking your City 1016 ka quote that you're giving me. So we'll go directly to Mariam, let her post on her social media. Doesn't work like that. आप रेडियो पे जाती हैं सुबह सुबह. मैंने सुना है कि आप सुबह उठना पसंद नहीं करती, लेकिन सुबह शो करना पसंद करती हैं. ये कैसे? It's just the waking up time. Right? It's you, because मैंने 10 साल almost 10 साल I've done the evening show. तो मैं सोती थी 4 बजे, 3 बजे, उठती थी 11-12 बजे. सुबह. And now I have to सोती थी और and now I have to wake up at 4:30 a.m. Right. तो it was very tough. एक शो तो मैंने ऑलरेडी मिस कर लिया है. I was late for the show. डांट वांट पड़ी? मतलब नहीं, because it was the first time. But like, it should not happen later. I was like, yeah, it will not happen later. But I don't like waking up. I'm not a morning person. I am groggy for the first 2 hours. आवाज भी नहीं. Your आवाज is also not open, yeah. The first hour, 6 to 7 o'clock on air bhi, I am talking like this. So I'm really not a morning person. I need 3 cups of coffee in the morning. But show pe jab hum on air jaate hain, when that mic is on, it's something that you love, right? You're magic. Entertaining. It's magic. You're entertaining listeners. Listeners, in fact, they say, good morning. They are driving. I'm like, wow, your energy is reflecting on me. Thank you very much. अब सुन रहे हो, वही अच्छी बात है. And it really makes your day. तो जब मैं शो शुरू करती हूँ, it's fine. But it's before the show, just getting up is the problem. Wow. So radio पे अगला टारगेट क्या है आपका? Of course, in parallel, you're hoping and inshallah you will make it to your acting career. Yeah. So radio पे would you want to continue as an RJ या कोई और मतलब डायरेक्टर्स की तरफ जाना चाहती हैं या कुछ प्रोड्यूसर शायद नहीं मेरे ख्याल में. कौन सा रोल आप लेना चाहती हैं अगर मिले तो? To answer that question very honestly, I think I love where I am right now. I do not want to see myself back end. It's a very hard job to be
the programming director of a station with 7 personalities. So I would not go there because I love being on air. Right, that's the real talent, of course. Yeah, that is something I would like to continue doing. The goal is to make sure, क्योंकि अभी शुरू किया है breakfast show. The goal is to make sure the Breakfast #1 show is one of the best shows. So when people tune in, they're like, yes, we love listening to that show. And people will take time. People will take time to get used to Varun and me together. So it will take time, but just that's the goal, to just make that show a feel-good show that people would like to listen to. Beautiful, beautiful. तो एक मैसेज हमारे 2 मैसेजेस लेना चाहूँगा मैं अपने ऑडियंस के लिए. एक तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि उनके लिए कोई ऑप्शन है कंटेंट क्रिएट ना करना. Hard truth, Tariq ji. If you are doing, give me like a sector, any sector, कोई भी फील्ड हो. कोई भी फील्ड हो. आई थिंक दीज डेज आप शुरू तो कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है that you have to put yourself out there. And the easiest way is the content that you produce. To just make sure कि लोगों को पता है कि आप हो इंडस्ट्री में and you are there to serve them and for their happiness. So I do feel in any way, social media ho, if you can put in money and do other kinds of marketing, you have to produce some sort of content. It's the hard truth. Right. It is the hard truth. If you feel word of mouth is going to help you, you can try that out for sure. अगर आपकी restaurant हो or whatever. That is also something. किसी का luck भी चल जाता है and their product works with word of mouth. But as of now, I feel in this market and this competition, putting out content is slightly important. Not slightly, it is very important. I think it's mandatory. It is. You अगर have mandatory नहीं समझना तो दूसरा एक ऑप्शन है, सिटी के पास चले जाएं. आ जाओ हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, मेंशंस करेंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए. आ जाओ. Absolutely. तो आज का दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, फाइनल क्वेश्चन, कि आजकल जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, 3 उनको जो टिप्स देना चाहेंगे वो क्या होंगे? Number 1, please be yourself. अगर आप if you're fake, if you're someone you're not, you will burn out. और आपको नहीं पता चलेगा आपको क्या पोस्ट करना है, क्या डालना है, because you are not yourself. That's number 1. Number 2, आपकी vulnerability, like we said, vulnerability. No, I'm not getting the word. Wait. उपलब्ध के साथ vulnerability. Vulnerability. Yes, we got this. Please make sure कि you are relating, because a lot of people on social media and who will watch you, whether you're doing a TV commercial, whether you're doing a radio spot or something on content on social media especially, बहुत लोग ऐसे हैं where they just want to make sure कि you understand what they are going through. And if you put yourself out there as real as possible, they will connect with you and that will work for you. And number 3, relatability and being a very feel-good person. Please be very relatable. You have 10,000 things in your mind right now that is extremely relatable to 10,000 people out there. Please don't be somebody you're not. You are not going to be fake. You have to be extremely relatable, and that is what's going to help you. That's about it. It's easy also. It's easy to be relatable and real. It'll help you so much and you will not burn out. That's what it is. You have spoken the truth. Yeah. Absolutely. Yes. Thank you so much, Mariam, Thank for you, being Tariq with ji. me. Thank you. It's been a wonderful, wonderful conversation. I'm sure our listeners, our viewers, our audience are going to learn a lot from this episode, especially आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए. और उसमें से बहुत सारे लेसन्स है. कंसिस्टेंसी का मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था. उसके बाद ऑथेंटिक होना, वल्नरेबल होना, अपना ट्रू सेल्फ सामने रखना जो कि लोग जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये चीज़ें हम सीख लें इनसे, तो मेरे ख्याल में अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कई दर्जे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं मेरे ख्याल में. Thank you so much once again. Thank you, and I have to tell you, you have a wonderful office. Thank you. You know, we go and enter a lot of offices, right? Shoots ke liye वगैरह. But I entered here, and Suzanne was sitting at the reception, super warm. You just felt like you were coming. It looks like a beautiful office, but you feel like you're coming home. यहाँ पे जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, there is a pool table. Okay, there's a pool table. We played pool before this podcast. और ये तारिक जी की ऑफिस है. It is his office.
So you can actually tell how at home I am feeling right now. And congratulations from Thank 4 you. to 150 Inshallah. employees. Like and you, we a have lot dreams more. as well. And a lot more. We have much bigger dreams like you. Oh, inshallah, you will Inshallah. reach that. You will reach that. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Think and grow 10x. Now, this is exactly what we spoke about in the podcast right now. I've not finished my coffee because we've had such a wonderful time talking. Tariq ji, thank you so much. But you've got to like, you've got to subscribe, you've got to follow on TikTok, YouTube, and Instagram. I promise you, you're not going to be disappointed.